Question, it says a wooden beam 100 mm wide and 150 mm deep is simply supported over a span of 4 meters. If shear force at a section of the beam is 4500 Newton, find the shear stresses at a distance of 25 mm above the neutral axis. ठीक है, तो इसमें उन्होंने पूछा है कि आपको shear stress कहाँ निकालना है, distance of 25 mm above the neutral axis. A size of the beam is 100 mm wide है, 150 mm deep है. This is B, this is D, and it's simply supported beam. Span is 4 meter. ठीक है. If shear force at a section of the beam is 400 Newton, तो आपको इसमें shear force की value given. So you have to calculate the shear stress at a distance of 25 mm above the neutral axis. What is the value of the section or simply supported beam as पे force लग रही है? Shear force. This is SF, shear force. Shear force. ठीक है. What is the value of shear force given in the question? It is given as 4500 Newton. 4500 Newton. ठीक. और उसके बाद हमें गिवन है B is equals to 100, D is equals to 150. B is 100 and this is 150. Okay. Or what else? Length of the beam is 4 meter. Span is 4 meter. Now you have to calculate the tau. What is the shear stress? Tau is shear stress. Shear stress. ठीक है. This is you need to calculate. So we have this formula. Tau is equals to F into force into area of the section of the beam into y bar divided by b. ये इसका फॉर्मूला है. सो इन्होंने बताया है कि इसमें 25 mm की डिस्टेंस पर आपको कैलकुलेट करना है. तो इसका जो CG है उसका डिस्टेंस इज अ y बार फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको पता चल गया कि न्यूट्रल एक्सिस ये है, तो इसका डिस्टेंस दिस इज 75 mm. ठीक है, 75 mm हो गया. और यहाँ पर 25 mm की डिस्टेंस पर दिस इज 25 mm. ठीक है, दिस वैल्यू इज इसमें मेंशन नहीं हो रहा. आप इसको मैं बाहर ही लिख देती हूँ. नॉट एबल टू राइट एनीथिंग. दिस इज 25 mm दिस डिस्टेंस. ठीक है, तो इसका CG जो होगा वो कहाँ एक्ट करेगा? 75 minus 25 50.
ठीक है, तो दिस नाउ यू हैव टू कैलकुलेट बाई बार फ्रॉम, इसको डिवाइड कर देंगे 25 + 25 50 है ना, सो बाई बार विल बी योर। अब हमें ये चीजें जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, बाई बार कैलकुलेट करना है, एफ हमें पता है, बी हमें मालूम है, and then we'll place all these values in it, we'll get the shear stress. So y bar will be distance of the section from the neutral axis. So here area is 50 by 100, क्योंकि ये वाला 25 mm away from the neutral axis है, तो 25 हमने 75 में से माइनस कर दिया, we have got the depth and this b we know, तो एरिया जो हो जाएगा that is y bar, समझ में आया? 25 mm तो डिस्टेंस पे उन्होंने सेक्शन बताया, प्लस उसका हाफ ऑफ दिस, 50 का हाफ कितना है, टू रीच हेयर हमें यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए व्हाट वी नीड, ऐसे रेड कलर से दिखाती हूँ, ये सीजी है इसका, इस सेक्शन का सीजी है, ठीक है। तो ये 25 mm और हाफ इस लेंथ का हाफ, एंड दिस प्लस दिस विल गिव यू 50 mm, तो 25 + 25 ठीक है। अब एरिया हो गया 50 into 100, this is 5000 mm square. Okay, now what else is left? Force we know, area we have calculated, by bar also calculated. Now put in this formula, shear stress is equals to F is 4500 into area is 5000 into y bar is 50 divided by b. B is 100. So what is the shear stress? 2 0 से 2 0 कट गए, 5 5 25 और से मल्टीप्लाई करिए, टोटल is how much? तो हमें सब सही है, इसमें आई भी है और मैंने आई स्किप कर दिया, ओके आई भी है नीचे, हाँ आई भी ऐड होगा क्वेश्चन में, यहाँ पर आई भी है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So moment of inertia we know is equals to B/d³ upon 12. So this is equals to 100 into 150 की power cube divided by 12. ठीक है, इसको फर्दर जो वैल्यू आएगी उसे डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पर डिवाइड बाई 100 into I, ठीक है, I था 100, कितना है B/d³ upon 12 में डायरेक्ट वैल्यू देख कर लिख देती हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा. I is 28125 000. 28125 000. Now check what is the answer and just putting in the formula we'll get it. Is 0.4 Newton per mm. ठीक है, so with this formula you can calculate the shear stresses. 0.4 Newton per mm square is the
value of the shear stress acting on this beam for the force of 4,500.